Hello everybody, a very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy. This is Surbhi, your educator, and I welcome you all to our channel. Let's crack CSIR UGC NET and let's start with our today's session. And before starting, let me confirm once whether I am audible and visible or not. So, yeah, so network connectivity is fine. Hello everyone. Let's start with our today's session, that is for GATE crash course, and in this class we are going to see about antibodies, how they are produced, वो कौन प्रोड्यूस करते हैं और उनका क्या रोल होता है. So before moving into the lecture, let us discuss benefits and advantages of Unacademy जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी. तो ये प्लेटफॉर्म आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, एंड इन दिस लाइव क्लासेस यू कैन हैव 1-to-1 इंटरेक्शन विथ योर एजुकेटर्स. यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द पोल्स ड्यूरिंग द लाइव क्लास. ठीक है, तो एक ऐसा लाइव क्लास जो कि एक घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलता है, वो होती है अनअकैडमी की लाइव क्लासेस. इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारे टेस्ट सीरीज और क्विजेज अटेंड करने का मौका. एंड इन दीज टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशंस you have given a chance to evaluate your performance time to time. ठीक है, टाइम टू टाइम आप डिफरेंट टेस्ट दोगे, तो उससे क्या होगा, आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाओगे. बहुत सारे बच्चों के बीच में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपके लेवल क्या, आपकी प्रिपरेशन की लेवल कितनी है, वो आप देख पाते हो इन लाइव टेस्ट सीरीज. इसके अलावा आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, जहां पर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कराने के लिए एक बहुत ही डिज़ाइन तरीके से आपके पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, जहां पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हो जाते हैं. इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द कंटेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन क्लासेस, अनअकैडमी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद लॉट ऑफ क्लासेस दैट आर फ्री फॉर ऑल. ठीक है, और ये क्लासेस होती हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस, एंड दीज स्पेशल क्लासेस आर प्रेजेंट इन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आपको लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल. Then after creating your profile, you have to select your goal at CSIR UGC NET, and after selecting your goal, you have to search for different educators. If you want to attend my special classes, तो उसके लिए आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं स्पेशल के लिए प्लेटफॉर्म पे, वो सब का रिकॉर्डेड वर्जन वहाँ अवेलेबल है, जिनको आप देख सकते हो. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सब्सक्रिप्शन, तो CSIR UGC नेट के सब्सक्रिप्शन आपको डिफरेंट मंथ्स के लिए मिलते हैं, और जो प्लान भी आपको परचेज करना है, उस प्लान में आप अगर 10% डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड, दैट इज SURBHI01, and by using this code you will get a 10% off. So that's all about the general introduction. Now moving to the lecture, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, that is related to B cell and how they are producing antibodies. Is it clear? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, दैट इज अबाउट द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन. ठीक है, चलो, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन बात करने से पहले, antibodies are what? Antibodies are nothing but they are present on the surface of the B cells, and they are known as B cell receptor in a broad term.
सो अगर हम बात करें ओवरऑल बी सेल रिसेप्टर की, सो बी सेल रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. वन इज अ एंटीबॉडी और immunoglobulin, and another is a domain that is called as Ig alpha and Ig beta domain. So there is a antibody, and this antibody is usually IgM. So there is a IgM antibody. This green color are the variable regions, this purple color are the constant region, and these smaller membrane attached molecules are Ig alpha and Ig beta. So this is a complete B cell receptor that consists of IgM plus Ig alpha plus Ig beta. ठीक है, and Ig alpha has item domains. मीन Ig alpha के पास क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है. So whenever a antigen will bind to the variable fragment of antibody, so this antigen antibody interaction will induce some intracellular signaling, and these intracellular signaling will be passed on to the items domain of Ig alpha, and finally it will move inside the cytoplasm for the intracellular signaling cascade. So basically the antigen antibody binding will induce a signal that will be transmitted to the cytoplasm via these items domain present in the Ig alpha chain of B cell receptor. So Ig alpha, Ig beta क्यों होते हैं? Mainly to transfer the signals after antigen antibody binding to the cytoplasm. So this basically they are for signal transduction. Okay, so the B cell receptor is composed of Ig alpha, Ig beta and IgM. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एंटीबॉडीज के बारे में देखते हैं. सो एंटीबॉडीज ऑल्सो नोन एज immunoglobulins are glycoprotein having different binding sites for antigen, and they are produced by the plasma cells in response to stimulation of B cell by the foreign antigen. Okay? So these These antibodies are what? They are molecules that are produced by the plasma cells, and that are glycoproteins which can bind to the antigens and neutralize them. So basically they have a V-shaped structure that consists of two light chain and two heavy chain. Molecular weight of light chain is approximately 24 kd, and molecular weight of heavy chain is approximately 15 kd. These antibodies are divided into two parts. Basically, the antibody that is a Y-shaped structure, it is divided into two parts. One is the C-terminal domain, that is known as FC part, and another one is the N-terminal domain, that is known as FAB part. तो टू पार्ट, एक सी टर्मिनल हो गया, एक एन टर्मिनल हो गया. सी टर्मिनल को हम एफ सी पार्ट बोल सकते हैं और एन टर्मिनल को हम एफ ए बी पार्ट बोल सकते हैं, दैट इज वेरिएबल पार्ट फॉर एंटीजन बाइंडिंग. The N-terminal region or the FAB fragment is quite variable, with the sequence of amino acid changing, and that's why this region is also known as complementary determining regions. So the FAB fragment of the antibodies, they have different sequences of amino acid, and they are also known as CDRs, that is complementary determining regions. So this is the structure of an antibody. This is a heavy chain, तो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, and this is a light chain. ठीक है, सो दो हेवी चेन, दो लाइट चेन मिलके एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज. एंड दीज आर द FAB fragments, that is the fragments for the binding of antigens, and they are also called as CDRs, that is complementary determining regions. And these are the constant regions, that is also known as FC region. ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर. दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग पार्ट और FAB पार्ट. दिस इज द FC पार्ट, that is for constant region. Now these
antibodies, they consist of number of constant regions in the heavy chain. So if you see the heavy chain, so this is a variable region and this region is the constant region, and within the constant region there are several chains, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे CH chains. So the heavy chain will consist of several heavy chains, and depending upon the number of the heavy constant region chains, different type of antibodies are there. So basically the number of CH will vary in different antibodies. So it can have 3 or some antibodies can have 4 CH regions. So IgG, IgA and IgD, these 3 antibodies have 3 CH regions, and IgM and IgE has 4 CH regions. ठीक है, तो 4 CH regions किस में होते हैं? IgM और E में, मी में, ठीक है. 3 CH regions किस में होते हैं? डैग में, ठीक है. डैग में 3 CH regions होते हैं, मी में 4 CH regions. Next is the light and heavy chains are linked via disulfide bond along with some van der Waal, some kind of hydrophobic and salt breach interaction. So अगर ये light chain है और ये heavy chain है, so these two chains are linked together via covalent interactions like van der Waal covalent interactions like disulfide bond, as well as non-covalent interactions जैसे कि van der Waal, hydrophobic and salt breaches. So these two chains are held together with the help of non-covalent as well as covalent interactions. Next point is hinge region. So region from where two heavy chain bifurcate is known as hinge region, and within the hinge region, this region is rich in cysteine and proline amino acids. ठीक है, ये रीजन जो होता है हिंज रीजन, वो क्या होता है? सिस्टीन और प्रोलीन अमीनो एसिड में रिच होता है. ओके, तो एट दिस पॉइंट अगर ये एक हेवी चेन है, तो हेवी चेन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? बाइफर्केट हो रहा है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज हिंज रीजन, एंड दिस हिंज रीजन it is rich in cysteine amino acid so that they can form disulfide linkages, and these are rich in proline amino acid so that proline can acquire cis configuration, and due to cis configuration there can be bifurcation. So basically cysteine residue is there for disulfide bond formation and proline residue is there for the bifurcation of the heavy chain. So this point is done. Next point, thus cysteine amino acid will provide disulfide linkages and proline will provide flexibility to the heavy chain so that they can bifurcate and they can change their shape for binding with the antigens. And only 3 antibodies IgG, A and D, they has significant hinge regions. ठीक है, तो IgD, A और G, DAG, इनमें तो एक तो 3 CH रीजन्स होते हैं एज वेल एज दे हैव प्रोमिनेंट हिंज रीजन. ठीक है, इनके लिए 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं इन तीनों एंटीबॉडीज के. नेक्स्ट पे चलते हैं. द कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन्स जो होता है, जैसे कि CH1, CH2, CH3, ठीक है, या CH4 जो कि IgM और IgE में होता है, these constant regions they provide sites for carbohydrate attachment or glycolysis and thus makes the structure more stable. So usually ये जो CH1 होता है, CH2 होता है, CH3 होता है, these are the sites for glycosylation. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे glycosylation होगा. Binding region present in CH2 and CH3 पार्ट. यूजुअली CH2 और CH3 जो रीजन होते हैं वहां पे होती है आपकी अटैचमेंट कार्बोहाइड्रेट की. ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आफ्टर बाइंडिंग टू दी CH2 and CH3 पार्ट
they will mask the proteolytic site of antibodies and thus prevent their proteolytic degradation in the free form. ठीक है, तो ये अगर एक हैवी चेन है और यहाँ पे अगर ग्लाइकोसिलेशन हो गया है, so this glycosylation will mask the proteolytic site of the antibodies and thus prevent their proteolytic degradation. क्लियर, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोसिलेशन क्यों जरूरी होता है? टू प्रिवेंट द प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन स्टेप. नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क रीजन. सो within the hypervariable region there are some stretches of amino acid that remain constant. So if this is an antibody, ठीक है, अगर ये एक एंटीबॉडी है तो we know that this region is known as FAB region या फिर CDRs या फिर hypervariable region. And within these hypervariable region there is a small stretch of sequences or small stretch of amino acid that are conserved in all different type of antibodies, and these conserved region within the hypervariable sites are known as framework regions. ठीक है, तो hypervariable regions जो कि क्या करते हैं, जहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस वेरिएबल होता है, and within these hypervariable there is a small stretch of sequence that has constant amino acid sequence and that is known as framework region. ठीक है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको किस किस टर्म में. एफ ए बी टर्म में क्या होता है, सीडीआर्स क्या होते हैं, देन हाइपर वेरिएबल रीजन क्या होता है, देन फ्रेमवर्क रीजन क्या होता है. ठीक है, ये चार टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपके एंटीबॉडीज से रिलेटेड होते हैं एंड इन सब के डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए. क्लियर? Is this clear everybody? Great. चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. दैट इज enzymatic digestion of the antibodies. This is very important slide. So digestion of immunoglobulins by pepsin occur below the hinge region of the heavy chain. ठीक है, अगर ये एक एंजाइम है, अगर आप इसको पेप्सिन से डाइजेशन करोगे, so pepsin will digest this antibody at a region lower than this hinge region. ठीक है, तो ये जो हिंज रीजन के पास जो कॉम्प्लेक्स होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का, दिस विल रिमेन इंटैक्ट आफ्टर पेप्सिन डाइजेशन. तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फ्रैगमेंट जहाँ पे ये अपर वाला पार्ट जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगा एंड जो लोअर वाला एफसी पार्ट है ये फ्रैगमेंटेड हो जाएगा. ठीक है, सो डाइजेशन विथ पेप्सिन occur below the hinge region of the heavy chain and resulting into FAB डैश फ्रैगमेंट या फिर FAB2 फ्रैगमेंट. ठीक है, ये FAB डैश फ्रैगमेंट क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे दो फ्रैगमेंट्स अभी भी साथ में है एट द हिंज रीजन. so this is first type of digestion using pepsin that occur below the hinge region. And this FAB2 fragment is composed of two FAB fragments still linked by remaining portion of their heavy chains that is below the hinge region. तो ये FAB regions हैं इसमें, and along with FAB regions they have some regions that are associated with the
अदर पार्ट ऑफ हेवी रीजन, इसलिए हम इसको FAB-2 बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर पेप्सिन डाइजेशन यू विल गेट अ फ्रैगमेंट जिसको आप बोलोगे FAB-2 fragment, and in this case the FC fragment is degraded because वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे and they will undergo proteolytic cleavage. So this FAB2 fragment remain divalent, and because they will be present as a divalent complex structure, so pepsin digestion के बाद भी this antibody has a tendency to bind to the antigen and can form precipitate, ठीक है। They can go under the process of agglutination and can form precipitate. So even after a antibody is digested with pepsin to form fragments like FAB-2, this FAB-2 can still undergo the process of agglutination and can form precipitate, ठीक है। अभी भी ये precipitate form कर सकता है। So this kind of pepsin digestion does not eliminate the activity of antibodies. So first point regarding pepsin digestion is it cleaves the antibody below hinge region, and because cutting below hinge region हो रही है, so FAB fragment के साथ साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा रीजन भी एसोसिएटेड रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं FAB2, and this FAB2 fragment still has its tendency to undergo agglutination with antigen to form precipitate. So this is regarding the pepsin digestion. Next is papain digestion. So papain is a non-specific thiol endopeptidase. So it is an enzyme that has a sulfahydryl group at its active site. First point, it is a non-specific, means इसकी कोई substrate specificity नहीं होती है। ये by using its sulfahydryl group they can act as a endopeptides anywhere, ठीक है। So when IgG molecule are incubated with this papain in the presence of a reducing agent, they can cleave the peptide bonds along the hinge region, ठीक है। ये जो hinge region के along डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे एज वेल एज जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे उन सबको क्लीव कर देगा, ठीक है। हिंज रीजन के पास यहाँ पे जो भी पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे उन सबको क्लीव कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है। लेट्स अज्यूम अगर क्लीवेज हो रही है यहाँ पे, क्लीवेज of peptide bond in the hinge region, so when there is cleavage at this point, so ये एक फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट और ये एक फ्रैगमेंट, आपको 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे of equal sizes, and these 2 fragments they have their FAB fragment and एक होगा FC fragment. So by papain digestion cleavage is at the हिंज रीजन, ठीक है। हिंज रीजन के पास क्लीवेज होती है, एंड ड्यू टू द क्लीवेज एट हिंज रीजन यू विल गेट 3 फ्रैगमेंट्स, 3 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं आपको, एंड दीज 3 फ्रैगमेंट्स आर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। 2 FAB फ्रैगमेंट एंड 1 FC फ्रैगमेंट, बट सबका साइज क्या होगा, बिल्कुल ही सेम होगा। कितना होगा, 50 kDa, 50 kDa और 50 kDa, ठीक है। बिकॉज एक अगर हम बात करें, एक अगर ये एक एंटीबॉडी है, ये इसका लाइट चेन है, तो एक लाइट चेन होता है 25 kDa का, ठीक है। तो ये 25, ये 25, टोटल 50, ये 25, 25, 50, 25, 25, 50. So after papain digestion, you will get 3 equal size fragments of 50 kDa, in which 2 of the fragments are FAB and 1 fragment is FC. Clear? Is this clear to all of you?
Is it clear? Anybody? Let me know. आगे चले. नेक्स्ट इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. देखो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. तो एंटीबॉडीज कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटीजन व्हेन दे आर इंजेक्टेड इन अ नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल. मतलब अगर एक इंडिविजुअल का एंटीबॉडी निकाल के दूसरे इंडिविजुअल में इंजेक्ट किया जाए, सो दिस एंटीबॉडी कैन एक्ट एज अ एंटीजन इन दैट इंडिविजुअल. दैट मीन्स दिस एंटीबॉडी हैज अ टेंडेंसी टू एक्ट एज अ एंटीजन. ठीक है. तो एंटीबॉडीज के पास उनके खुद के क्या होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज. क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी. सो बेसिकली देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी. IgG, A, M, D, E. ये होते हैं 5 एंटीबॉडीज के क्लासेस. IgG, लेट्स सी क्या होता है. सो IgG इट इज द मस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी. ये क्या होता है, मस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होता है. 4 subtypes which are differ in the sequence of amino acid in the constant region are there. ठीक है. So IgG is basically divided into subtypes like IgG1, G2, G3 and G4, and these subtypes are there due to difference in their constant region. ठीक है. कांस्टेंट रीजन में डिफरेंस के कारण दे कैन बी क्लासिफाइड एज डिफरेंट सबटाइप्स G1, G2, G3 and G4. Sequence of amino acid differ in the constant region. Next point is 2 type of light chains are there, kappa chain and lambda chain. Okay. The type G1, G2 and G4 they can cross placenta. So basically IgG is the antibody that has a tendency to cross the placenta and provide immunity to the fetus. और IgG में भी जो subtypes G1, G2 और G3 होते हैं, they can cross the placenta and provide fetus immunity. These subtypes will vary in their concentration in the serum. So IgG 1, 2, 3, 4 ये है इनका approximate concentration. So IgG1 जो होता है वो highest होता है 66%, followed by G2 23%, then G3 that is 7%, then G4 that is 4%. So these are equivalent concentration of different subtypes of IgG in the serum. Next is half-life. So half-life of these IgG antibodies are high. So for IgG1, G2 and G4 half-life is 23 days, but for IgG3 half-life is only 8 days. So important point is IgG1, 2 or 4 they can cross placenta and they have half-life of 23 days. Then G3 it has a half-life of only 8 days and they cannot cross placenta. ठीक है. These are the important points related to IgG antibodies. Clear? IgG antibody, different subtypes G1, G2, G3, G4 due to difference of amino acid in the constant region. IgG1, G2 and G4 can cross placenta, not G3. Clear? This is clear? Fine. Okay. Next is IgG-M antibody. So IgG-M antibody after birth, these are the first antibodies to be produced by the neonates. So ऐसी बहुत बार question आई है कि which of the following antibody is to be produced first by an organism? So IgM.
सबसे पहले बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो इट इज IgG, जो कि मदर से आता है थ्रू प्लेसेंटा। बट कौन सा एंटीबॉडी बॉडी जो है वो पहली बार बनाता है, तो इट इज IgM। So after birth, these are the first antibodies to be produced by the neonates, and they are first ever produced by B cell in any immune system. Okay. It is a pentameric enzyme, means 5 यह है 5 different antibodies है, and these 5 different antibodies are joined together via J chain to form a pentameric IgG complex. ठीक है, so it is a pentameric complex joined together by J chain, and because it is composed of 5 different antibodies, so it is the largest circulating antibodies. एक antibodies का weight approximately कितना होता है, 150. So 150 into 5, so it is approximately 700 to 900 kg. 10 antigen binding sites are there because 5 antibodies are there, and one antibody has 2 antigen binding sites. So total number of antigen binding sites would be 10. But due to steric hindrances to the IgM antibody, at a point 5 to 6 antigen can bind. Okay? So maximum capacity is 10, but due to steric hindrance, only 5 to 6 antigen can bind at a time. Now these antibody antigen complexes, they will act as a potent activator of complement factors. Okay? Next is IgA antibody. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक किसी को कुछ डाउट है? Next antibody is IgA antibody. IgA antibody, these are secretory antibodies that are mainly present in mucus, tear and milk. And basically these IgA antibody, they exist in 2 subgroups that varies in their heavy chain. ठीक है, ये अगर IgA होता है IgA1 और IgA2, and these two are differ on the basis of sequence of amino acid in the constant region of heavy chain. ठीक है, so 2 subgroups are there based upon the heavy chain, and because they are secretory antibodies, so they are present in secretions. But when they are present in serum, they exist as monomeric form. While when they are secreted out, they will become either dimer, trimer or tetramer. And in case of dimer or trimer, different IgA antibodies are joined via J chain. And whenever they are present in the secretion, so in order to protect their catalytic site, their proteolytic site, a secretory piece is there that will mask the proteolytic site of IgA antibodies and thus protect their degradation in the secretion.
So these Ig antibody, they have a specific characteristics known as secretory piece, and these secretory piece is present on the surface of the Ig antibodies to prevent their degradation in secretions. So what happened? Plasma B cells, they will move to the submucosal layer, and there they will release IgA antibodies. Now these IgA antibodies, when coming to the secretions, they will form dimer, and after dimer formation, antibody will bind to the receptor present on the basolateral layer of epithelial cells, that is with a poly Ig receptor. So in the form of dimer, these antibodies will bind to the poly Ig receptor. Okay? Now IgA will move inside the epithelial cell, means inside the secretion, and during the movement of IgE inside the cell, they will move along with the poly Ig receptor as a secretory piece. So while entering inside the cell, the Ig antibody will remain bind to this poly Ig receptor, and this poly Ig receptor will exist, and it is known as secretory piece. And this secretory piece masks the proteolytic site and thus provide resistance during the secretions. Clear? Next is IgE antibodies. So IgE antibodies, they are responsible for parasitic infections. First point. And allergic reactions are primarily caused due to IgE stimulations. When you are exposed to an allergen, what happens? B cell on their surface has IgE antibodies, and these IgE antibodies will bind to the allergen and process them, and now these allergens are exposed on the B cell surface. Now B cell surface के ऊपर एंटीजन के फॉर्म में एलर्जन एक्सपोज्ड होंगे. Now these exposed allergen will bind to the T cell, resulting into the T cell activation, followed by differentiation of T cell into Th1 cell and Th2 cell. Then Th2 cell will act as immune suppressor, and Th2 secretes cytokines like interleukin 4, and these interleukin 4 will induce more number of B cell to undergo differentiation and maturation into plasma cells and memory cells. Now, when large number of plasma cells are stimulated, so these plasma cells produce large amount of IgE antibodies against these allergens, and finally the allergens present on the surface of the B cells are neutralized. So this is the whole process of allergen neutralization. First of all, allergen will enter, and after entering, allergen will move inside the, let's say, antigen presenting cells. They will be processed and presented on the surface of the antigen presenting cell. Now these allergens on the surface of antigen presenting cell will activate the T cell. T cell activates and get differentiated into Th2 cells. Th2 cells are the immunosuppressant that will release cytokines like interleukin 4. Now this interleukin 4 will induce B cell proliferation, B cell differentiation, and finally B cell will proliferate and differentiate into plasma cells and memory cells. Now these plasma cells will produce IgE antibodies which can neutralize these allergen. So the allergen can be eliminated. So this is the process of allergic response. Also, mast cells have FC receptor specific to constant region of IgE antibodies. जो हमारे बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दीज आर FC रिसेप्टर्स. सो जो IgE एंटीबॉडीज होंगे, these IgE antibodies with their FC region can bind to the mast cell, because mast cell has FC receptors. During the exposure of an allergen,
क्या होता है, IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. सो IgE एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड and these IgE antibodies with their Fc region can bind to the surface of the mast cell during the first time exposure. So whenever there is a second exposure, under second exposure, these allergen can directly bind to IgE antibodies over mast cell surface. ठीक है. So what happened? Mast cell है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर ये चीज हो गया. Whenever there is second exposure of the same allergen, then the allergen will go and directly bind to the IgE antibody present over the mast cell. Then binding of IgE antibodies to the binding of allergen to the IgE receptor on the mast cell will induce cross-linking. And after the cross-linking, the mast cells are activated, and this cross-linking will activate the mast cell, result into the degranulation of the mast cell. Then mast cell के अंदर granules होते हैं, and these granules has histamine, and after the degranulation, histamine is released into the secretions, and these histamine can activate mucus cell to secrete large amount of mucus, and large amount of mucus secretion can clog your respiratory tract, leading to severe allergic conditions and severe clinical manifestations. ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा किसका, IgE antibody का action, how they can induce the allergic responses. Clear? Next is 3 categories of antibodies. ठीक है, हम 3 different categories of antibodies होती है, isotypic, allotypic and idiotypic. ठीक है, 3 different type of antibodies determinant. First हो गया isotypic determinant. So they are different antibody classes. So there are basically 5 major isotypes: IgM, D, E, G or A. These are the 5 different isotypes, and the different isotypes are there on the basis of the difference in their heavy chain. ठीक है, तो ये जो 5 एंटीबॉडीज होते हैं IgG, M, D and A, they consist of different type of heavy chain. So IgG has gamma heavy chain, A has alpha heavy chain, M has mu heavy chain, D has delta heavy chain, and E has epsilon heavy chain. So on the basis of the heavy chain, the antibodies are differentiated into different classes, that is IgG, A, M, D and E, and these classes are known as isotypic antibodies. ठीक है, तो जहां पे भी क्वेश्चन रहेगा आइसोटाइपिक एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो यू हैव टू say these are the antibodies that are differ on the basis of their heavy chains. Next is allotypic antibodies. So subtypes जैसे कि IgG के जो subtypes होते हैं G1, G2, G3 and G4, they are allotypes. So allotypes represent the genetically determined differences in antibodies between people. So if you and I have IgG, मतलब अगर एक इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 दोनों के हम IgG एंटीबॉडीज को कंपेयर करें, so they are related but they have some differences, and these differences will exist in terms of amino acid sequence in the constant region of heavy chain or light chain. ठीक है, so the allotypic antibodies are basically the antibodies that will differ in the constant region of
हेवी चेन या फिर लाइट चेन, बट डिफरेंस कहाँ होनी चाहिए, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। So these are allotypic antibodies. Next is idiotypic antibodies. Idiotypic antibodies क्या हो गई? So these idiotypic antibodies are differ in their variable reasons. ठीक है? So idiotypic are the antibodies that can recognize different epitopes, and the reasons that determine the idiotype is the sequence of amino acid in the variable region. ठीक है, variable region में differences के कारण idiotypic antigenic होते हैं, मतलब यहाँ पे difference होगा। FAB fragment में अगर difference है तो the category of antibodies are idiotypic antibodies determinants. Is it clear till here to all of you? Clear? So these are the three categories of antigenic determinant. First is isotypic, then allotypic, and the third one is idiotypic. ठीक है? So these are the three categories of antibodies and their antigenic determinant. Next slide is what are the functions of antibodies. ठीक है? So the most important function of antibodies is to confer protection against microbial pathogens. Okay? So the antibodies can provide protection against the pathogen by different ways. First is neutralization, means antigen can bind to antibodies and by the process of agglutination. ठीक है, antibody antigen bind करेंगे by the process of agglutination resulting into the precipitation and neutralization. Next is the opsonization. So the antibodies can go and bind on the surface of pathogen, and upon binding to the surface of pathogen, these antibodies can make these pathogen easily available for the phagocytic cells. So they can perform neutralization, opsonization. Antibodies can also induce killing by oxidation or agglutination and precipitation. Next is antibody dependent cellular cytotoxicity. So antibodies can also participate in a specific pathway that is known as ADCC. That is antibody dependent cellular cytotoxicity. ठीक है, ये क्या होता है, ADCC. So cell mediated immunity, where a target cell bound with antibodies, they will get recognized by the immune cells. ठीक है, so first of all this is a pathogen or any kind of target cell, and antibody will go and bind to the surface of the target cell, and this antibody has FC region, and the FC region of the antibody can be recognized by the NK cells. Okay, so what happened, antibody go and bind to the pathogen, FC region of the antibody can be recognized by the NK cells. So NK cells are the natural killer cells, and inside their cytoplasmic, these NK cells contain different molecules like porphyrin that can create pores, and there are enzymes like granzymes that can target the DNA. So basically natural killer cell will interact with the pathogenic target cell, and they can introduce their content inside the target cell, leading to the death of the target cell. So this is antibody dependent cellular cytotoxicity. Next is antibody can also activate the complement system. Antibodies and antigen will make a complex which will activate
complement factors like C3, C4, C5, and ultimately will result in the formation of a membrane attacking complex, and this membrane attacking complex can create pores in the membrane of the pathogen, resulting into their death. So these are the 6 possible ways by which an antibody can function. Either it can neutralize the antigen, it can help in opsonization, it can kill by oxidation, it will undergo agglutination or precipitation, it can participate in ADCC pathway, or it can activate the complement system. So this is the 6 major role of antibodies. Now coming to last topic for today, that is antibody production. So each Y-shaped antibody molecule will consist of 2 sites for antigen binding. ठीक है, और जो antigen binding sites होती हैं, these are known as paratops, and they can attach to a specific epitope on an antigen. Means there is a paratop molecule, and this paratop can bind to the epitope, that is antigen. ठीक है, so paratop और epitope binding मतलब antibody antigen binding. So based upon the paratops affinity, there are different kind of antibodies, polyclonal and monoclonal. So polyclonal antibody क्या होता है? If you inject a antigen, एक antigen है जिसके पास क्या है, different epitopes है, ठीक है, A, B, C, different surface molecules हैं. अगर किसी एंटीजन के पास, अगर आप उसको किसी माइस में इंजेक्ट कर रहे हो, then the antigens will enter, it will be processed by the antigen presenting cells, and the antigens will be migrated to the spleen with the help of APCs, and inside the APCs these antigens will activate the B cell and T cell, and B cell will get activated, differentiated into the plasma cell, and plasma cell will produce antibodies. Okay, and these antibodies will produce by the plasma cells are known as polyclonal antibody, क्योंकि the antigens which you have inserted has many epitopes. So ये जो antibodies बनेंगे ये different epitopes के लिए होंगे, and thus they are known as polyclonal antibodies. ठीक है, तो inject antigen into rabbit, यहाँ पे आपने एंटीजन इंजेक्ट किया, देन आफ्टर द एंटीजन इंजेक्शन एंटीजन विल बी प्रोसेस्ड एंड फाइनली इट विल एक्टिवेट द बी सेल. ठीक है, एंटीजन ने बी सेल को एक्टिवेट कर दिया, बी सेल जो है एक्टिवेट होकर प्रोलिफरेट करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स. नाउ प्लाज्मा सेल्स विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंड दीज एंटीबॉडीज हैव different paratops for different epitopes, and thus they are known as polyclonal antibodies. ठीक है, next thing is monoclonal antibodies, and how can you produce monoclonal antibodies? So we are going to see that now. So monoclonal antibodies, these antibodies can recognize single antigens, and the monoclonal antibody are produced by immunizing an animal multiple times with a same antibodies having only one epitope. ठीक है, so after the immunogen has caused an immune response, then the B cells from that organism is isolated, and B cell is spleen is isolated, and from the spleen B cell is taken out. ठीक है, so monoclonal antibodies are specifically recognizing only single antigen. ठीक है, and you can induce the production of monoclonal antibody by immunizing an mice or any animal model with the same antigen multiple times. ठीक है, and after immunization आप उस organism के spleen को isolate करो, and from the spleen you can isolate the B cells. Now these B cells
that are specific for producing only one antibody. So these spleen cells, from these we can isolate the B cells, but these B cells are what? They are normal cells, so they are unable to proliferate forever. मतलब ये हमेशा के लिए आपको monoclonal antibodies नहीं दे सकते हैं because they have a limited lifespan. So normally these B cells are fused with immortal cancerous cells that are known as myeloma cells, and the fusion of normal B cell plus cancerous myeloma cells are known as hybridoma cells. ठीक है, and the fusion of normal B cell and cancerous B cell is mediated by polyethylene glycol. ठीक है, so how does this process happens? So first of all आप एक ऑर्गेनिज्म को इम्यूनाइज करोगे, देन उसके स्प्लिन को आइसोलेट करके वहां से बी सेल को लेगो, बी सेल को लेकर आप जो कैंसरस बी सेल्स होते हैं दोनों को फ्यूज कराओगे, देन यू विल गेट हाइब्रिडोमास. सो आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन से सेल्स जो है वो आफ्टर फ्यूजन बने हैं और कौन से सेल्स जो है वो बी सेल है और माइलोमा सेल है. सो देयर इज अ डेफिनेट स्टेप फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमास. So first of all of the cells जो हमने नॉर्मल बी सेल है, माइलोमा सेल है प्लस हाइब्रिड है, उन सबको हम एक मीडिया के अंदर ग्रो करवाएंगे. ठीक है, इन अ सेलेक्टिव मीडिया, एंड दैट मीडिया इज हैट मीडिया. ठीक है, हाइपोजैंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन. ठीक है, दिस मीडिया हैज हाइपोजैंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन मीडिया. ठीक है, एंड दिस हैट मीडिया विल ओनली अलाउ हाइब्रिडोमास टू ग्रो. Unfused myeloma cells as well as B cells will not grow in this selective media containing HAT. ठीक है, देखते हैं कैसे. Because in this case, in this fusion experiment, आप जो myeloma cells यूज लेते हो, मतलब जो आप आप जो कैंसरस B cells यूज लेते हो, myeloma cells, उनमें आप क्या करते हो, नॉकआउट कर देते हो. So these myeloma cells will lack HGPRT enzyme. ठीक है, HGPRT enzyme is required for nucleic acid synthesis. So when HGPRT is not there, so there is no nucleic acid synthesis via Salvage pathway. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए दो पाथवे होता है, एक होता है साल्वेज पाथवे, एक होता है डी नोवो पाथवे. So for Salvage pathway of nucleic acid synthesis, you require an enzyme that is HGPRT. So myeloma cells are basically mutated to eliminate their HGPRT enzyme. This is the first thing. Now, second thing is this media has aminopterin present that will interfere with nucleic acid synthesis by de novo pathway. ठीक है, डी नोवो पाथवे के लिए एक एंजाइम जरूरी होता है, एंड दैट एंजाइम हैज अ इनहिबिटर दैट इज नोन एज एमिनोप्टेरिन. सो इफ द मीडिया हैज एमिनोप्टेरिन, सो इट्स डी नोवो पाथवे इज आल्सो इनहिबिटेड. एज अ रिजल्ट जो माइलोमा सेल्स होंगे, माइलोमा सेल्स बिकॉज उनमें HGPRT एंजाइम नहीं है, तो दे डू नॉट हैव साल्वेज पाथवे. ऑल्सो द मीडिया हैज एमिनोप्टेरिन, सो इनका डी नोवो पाथवे भी इनहिबिट हो गया. एज अ रिजल्ट द माइलोमा सेल डिड नॉट हैव एनी पाथवेज और डिड नॉट हैव एनी फैक्टर टू सिंथेसाइज इट्स न्यूक्लिक एसिड, एंड दस माइलोमा सेल्स विल डाई आफ्टर सम टाइम. जब उनका न्यूक्लिक एसिड खत्म हो जाएगा तो वो डाई कर जाएंगे, बिकॉज वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो पाथवे फॉर DNA और RNA सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. देन देयर आर बी सेल्स जिनके पास सब कुछ फंक्शनल है, साल्वेज पाथवे है फंक्शनल बिकॉज इसमें HGPRT एंजाइम है. डी नोवो तो नहीं होगा बिकॉज एमिनोप्टेरिन इज अ inhibitor that will inhibit the enzyme dihydrofolate reductase enzyme that is required in de novo pathway. So myeloma cell will die, but B cells have HGPRT enzyme, लेकिन B cell का लाइफ स्पैन कम होता है, so वो 10 to 20 times मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली डाई कर जाएगा. But because plasma cells has HGPRT, but eventually they will die because they have a shorter lifespan. So only the hybrid cells जिसमें कि माइलोमा सेल प्रेजेंट है
as well as B cell present है. So B cell will provide its HGPRT enzyme to the myeloma cells, and myeloma cells can provide indefinite lifespan to the B cell, and together these hybridoma cell can grow for a longer time. So hybridoma cell can survive with producing nucleic acid and thus can grow for longer period of time. Thus hybridomas are selected in these had medias, and these hybridomas are specific for producing antibodies for a single antigen. And once a monoclonal antibody is produced by these hybridomas, they can be stored for longer time. So this is the process. First of all, you will add a specific antigen to the mice. Then from this mice, you can collect the spleen. स्प्लिन से आप क्या करोगे, बी सेल को लोगे और बी सेल और माइलोमा सेल को आप फ्यूज करोगे. एंड आफ्टर फ्यूजन you will select the hybrids by growing them into a specific media that is known as hat media. Then after selection of hybrids, you can get the monoclonal antibodies. Okay, so is this clear concept of monoclonal antibody? Next, let's see some major differences between the monoclonal and polyclonal antibodies. So monoclonal antibodies का expensive production होता है because इसमें you have to make a media, you have to perform different kind of fusion experiments. So it is a expensive method to produce monoclonal antibodies. But polyclonal को आप बहुत ही cheap price में बना सकते हैं. It has a long production time. Because first of all you have to produce B cell, then you have to fuse the B cells to myeloma cells, so it will take long time. Then it has a rapid production rate. But monoclonal antibodies, they have more specificity, they have less specificity. Monoclonal antibody can recognize a single epitope only, but polyclonal antibody can recognize multiple epitopes. The monoclonal antibody, the production is continuous because एक बार आपने हाइब्रिडोमास बना लिया तो वो indefinite टाइम के लिए सर्वाइव करेगा एंड एंटीबॉडीज बनाते रहेगा. बट पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं होगा. ठीक है. सो अ होमोजेनस एंटीबॉडी पॉपुलेशन एंड इन दिस केस अ heterogeneous polyclonal antibody production. So these are the basic differences between monoclonal and polyclonal antibody. So that's all about today's class. If you have any doubt with respect to today's class, let me know. If you have no doubt, that is fine. Very good. So yeah, that at last I would like to tell you that आपने जिन लोगों ने भी क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारा चैनल लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो टू गेट द नोटिफिकेशन. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट्स मिलती हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी और माई क्लासेस ऑन अनअकैडमी, so you can download the Unacademy learning app and you can create your profile, and by selecting your goal at CSIR UGC NET you can watch my classes. ठीक है. वहाँ पे आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो इन द CSIR UGC NET कैटेगरी. एंड वहाँ पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ. एंड नाउ डेज आई एम टेकिंग स्पेशल क्लासेस ऑन गेट PYQs. सो अगर आपको गेट PYQs करने हैं तो उसके लिए आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो Unacademy special class platform के ऊपर. And if you want to join Unacademy by using my subscription code, so that is Surbhi01. तो आप ये यूज़ करके कोड Unacademy special classes अनलॉक कर सकते हो मेरी. साथ ही साथ Unacademy सब्सक्रिप्शन जब आपको लेना है तो भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ ले सकते हो. सो दिस इज़ माई प्रोफाइल सुरभि कुमारी. जिसको भी Unacademy के ऊपर मुझे फॉलो करना है, यू कैन फॉलो मी एंड वॉच माई स्पेशल क्लासेस. So that's all for today's class. Thank you so much and keep studying. Have a nice day. Thank you.